Hello, welcome everyone. In this session, we are going to discuss paper of ISI UGB of 2023. We will be giving you solutions of all the questions, starting with question number 1. I am Surendra Jain, Master Teacher of Mathematics in Vedantu. So this is question number 1. It says determine all integers n such that every power of n has an odd number of digits. I am going to solve this question with the help of log, in which I will use concept of characteristics and mantissa. Suppose your n is some odd number of digits. Like if n is having just one digit, so let us say n is having value as 7. Then you can see this 7 is less than 10 and greater than 10 power 0. So log of 7 to the base 10 value will be 0 point something. I think some 84, something like that. Okay. You know this 0 is called characteristic and the value after point is called as mantissa. Okay, I can write this as C plus M. C for characteristic, M for mantissa. And here M will be less than 1, greater than or equal to 0. Similarly, if you take N as 3-digit number, let us say 567, because this number is less than 1000, this is less than 1000 and greater than or equal to 100. So log of N base 10 here for this 567 will be 2 point something. So you can write C plus M and you can check for this number to be 3 digits, C will be 2. Now similarly you can see whenever N is having odd number of digits, its characteristic is going to be even number. Okay, so for any N that is having odd number of digits, C will be even number. Now here we have to find all integers n such that every power of n has odd number of integers. So let us take n be such number, such integer. Now because they are saying for all powers it should have odd number of integers. So for power 1 also it should have odd number of integers. So for n power 1, if I take log to the base 10, its characteristic and mantissa will be such that C will be even number, okay, and M will be from 0 to 1. Okay, now if I raise this n by 2 and I take log, okay, so using this property of log, we can write this as 2 log base n base 2 log n base 10. Then it will become 2c plus 2m. Now, very interesting thing, that 2c will be even number, but 2m can take value from 0 to 2 because your m is from 0 to 1. Now, if 2m becomes bigger than 1, less than 2, then this characteristic thing will be 2c plus 1, that will be odd number. Okay, so if n square also has odd digits, odd number of digits, okay, then we want this 2m to be less than 1 and greater than or equal to 0, isn't it? Because if 2m becomes bigger than 1, less than 2, then this total sum 2c is even number, so 2c plus 1 will be odd number plus some mantissa. And if characteristic becomes odd number, then number of digits, as I explained to you here, will become even, it will not be odd. Okay, so if we want this n square to have odd number of digits, then this 2m should be within 0 to 1. Now if I do it further, so if I take log of n cube base 10, it will be 3c plus 3m. I can write this as 3c plus 2m plus m. Already 2m is from 0 to 1, as I explained in our previous slide, and m is also from 0 to 1. So you can see the sum of these two once again can become bigger than 1. But if we want n cube to also have value, such that number of digits are odd, then this 2m plus m should be, and that means 3m should be less than 1, greater than or equal to 0. Okay, and so on. Now you can see every time when I am increasing the power of n, we will be getting kc plus k times m, and assuming that this k minus 1 into m was
between 0 to 1, because whenever it will cross 0, it will cross 1, your that power of n will have even number of digits plus m. Okay, this is also from 0 to 1. So what you can see here, that for all the powers from n power 1, n power 2, and so on, n power k, okay, we were having that m, then we were having 2m, and so on, km. Okay, and you can see, because m is a positive number, m will be less than 2m, less than or equal to, this is less than or equal to 3m, and so on, less than or equal to km. Okay, now if m is non-zero, if m is non-zero, this one, this above one is a increasing sequence. If m is non-zero, then for some k, okay, this km will cross 1, will cross 1, and for that power, so for that k, yeah, for that k, this n power k will have even digits, even number of digits. Okay, now let us conclude this question. If we want, if we want this m, 2m, 3m, and so on, km, and in fact for all values of k, if it remains less than 1, greater than or equal to 0, is possible only if, is possible only if, you know, m is equal to 0. Okay, that means my number log n base 10, the original one, will be equal to c only, m value will be 0, and c was even number, so this n will be equal to 10 raised to the power c, and c is even number. So n equal to 100, we cannot take n c as 0. You could have taken 0 also, but we are given n is greater than 1, so n is equal to 100, 10 power 4, so 10,000, and so on. These are the numbers which will satisfy this property, and it can be seen very easily. This, suppose I take 100 is having 3 digits. If you do 10 power 2, it will be 10,000, so it will be having 5 digits. Then 10 power 3 will be having 7 digits, and so on. So this is the solution. So if I write n, so n is actually equal to, let me write this way, n is equal to 10 raised to the power 2, let us say k. Okay, and k belongs to natural number. That is the answer. That is the answer. Okay, so this completes the solution of this question number 1. Hello dear students, so let's discuss question number 2. So in this question we have given a naught is 1 by 2 and an is defined inductively by an is equal to root of 1 plus an minus 1 by 2. So first part इसमें क्या था कि अपने को प्रूव करना था कि an is equal to cos of theta n for some theta n 0 to pi by 2 and determine theta n. So clearly if we see a0 is 1 by 2 which is cos of 60. Right, so this is true for n is equal to 0, and we see a1 will be equal to root of 1 plus a0, that is 1 plus cos 60, or you can say cos of pi by 3 divide by 2. So we can apply 1 plus cos theta to cos k theta by 2, so ultimately we got cos of pi by 6. So we can see a naught is cos of pi by 3 and a1 is also a cos theta form. So similarly, if we see the A2 becomes cos of pi by 12, means the angle is just be the half of the previous one, pi by 3, pi by 6, pi by 12, and so on. So we can observe that an is cos of theta n, and the angle is forms a GP with a common ratio of 1 by 2, right? So now how to write this, that we have a an is equal to cos of
theta n. So for this, what we do, we assume that it is true for n minus 1. Assume it is true for, or we can say n is equal to k minus 1. We are assuming this is true for n is equal to k minus 1, means a k minus 1 is equal to cos of theta k minus 1, right? And obviously, because the terms are positive here, you can from easily see here the terms are positive because root of something, so we can say that theta k minus 1 is 0 to pi by 2, right? Now the next thing is, if we see ak, then ak will be equal to root of 1 plus ak minus 1, that is cos of theta k minus 1 by 2, which becomes 2 cos k theta by 2, and after square root, what we get, cos of theta of k minus 1 by 2. So that is ak. So we can easily see that it is a cos of theta. Now we have to find theta n. As first we have proved that it is a an is cos of theta n form. So now we have to find the theta n. So as we see, theta 2, or we can say theta 1, is equal to theta 0 by 2, and theta 2 is theta 1 by 2. So they are forming a GP. So we can say theta n will be equal to theta 0 by 2 power n. And what is theta 0 in our case? Pi by 3. So pi by 3 into 2 power n. So this is our theta n. Now what we have to find out, we have to find out the limit n approaches to infinity 4n into 1 minus an. So that is ultimately 1 minus cos of pi by 3 into 2n divide by, we can take this 4 power n to a denominator by making 4 raised to power minus n. So limit n approaches to infinity. So as n approaches to infinity, this denominator approaches to 0, and also the term in the cos also approaches to 0. So we have 1 minus cos 0, that is 1, 1 minus 1, 0, 0 by 0 form we have here. So what we can do, we can use the identity 1 minus cos 2 theta, that is 2 sine square theta by 2. So we can say limit n approaches to infinity, 2 into sine square, and this becomes pi by 6 into 2 power n over 4 raised to power minus n. So now we know sine theta by theta, if theta approaches to 0 is 1, right? So what we do here, we try to make theta in the denominator, that is pi by 6 into 2 power n square. So that we have 4 raised to power minus 1 already there, or you can say we are multiplying and dividing by the same term. We have 4 raised to power minus 1 in the denominator also. So we have this value is 1, right? So 2 into, and 4 raised to power minus n will cancel out. This will cancel out, 2 raised to power n square. So that is also cancelled out with 4 raised to power minus n. So what we ultimately we have pi square by 36, that is pi square by 18. So the answer of this is pi square by 18. Thank you guys. Hi everyone, so let us discuss problem 3 of ISI UGB 2023, and this was a problem based out of geometry and very simple problem, so as to say. In a triangle ABC, D and E are on AC and AB respectively. So D is on AC, E is on AB. And assume that they do not coincide with any of the vertices ABC. If the segments BD and CE intersect at point F, so this point is given to be F. This point is F, the point of intersection of CE and BD.
And consider the areas W, X, Y, Z of the quadrilateral AEFD and the triangles this and this. So basically these areas were mentioned in the diagram. So this is the area of W is the area of AEFD, X is the area of triangle BEF, Y is BFC and Z is CFD. So we need to prove two things. First is Y square is greater than XZ and also determine W in terms of X, Y and Z. So W is area of the quadrilateral. Now one thing which we are very clear about, we are not very confident about the area of the quadrilateral, but we can do amazing things with the area of triangles, right? So what we do is, the first thing is join AF. Join AF. So if you join AF, so basically this quadrilateral has been converted into two triangles. Let's say this triangle area is W1 and this is W2, and clearly W1 plus W2 is equal to W. Is equal to W. And we need to find, first of all, prove that Y square is greater than XZ and also find W in terms of X, Y and Z. Now see guys, if we talk about these two triangles AEF and AEF and BEF. So can I say AE upon EB, AE upon EB is equal to W1 upon X. It should be very clear to each and everyone, because these two triangles, they have different bases but same height, same vertical height, right? So vertical height would be the height from F to this side AB. So AE upon EB is this. Also, if we look at AE upon EB is W1 upon X. Also guys, AE upon EB, if you look at triangle, so again this was in triangle, we consider these two triangles AFE and triangle BFE. Now consider these two AEEB with, I mean the same two bases but vertical height from C. That is triangle AEC and triangle BEC. So can I say these two ratios AE upon EB is going to be W1 plus W2 plus Z, that is W plus Z upon X plus Y. And we can equate these two. So we have W1 upon X is equal to W plus Z upon X plus Y. Likewise, we can do the same thing on this side, AD upon CD. Same thing on this. So first of all, consider these two triangles ADF and CDF. So triangle ADF and triangle CDF. So we have AD upon DC is equal to W2 upon Z. W2 upon Z. And now consider the big triangles, that is ADB, triangle ADB and triangle CDB. So these two have the same basis, that is AD and DC. So AD upon DC is going to be W1 plus W2 plus X, that is W plus X upon Y plus Z. Upon Y plus Z. So I think we are done, almost done, because what we have done is we're able to find W1 and W2 in terms of X, Y and Z. So basically W1 from here is going to be W plus Z times X upon X plus Y, and W2 from here is going to be W plus X times Z upon Y plus Z. And what we know is W1 plus W2 is W. So just add these two up. So I'll just get it to the other side. So W1 plus W2 is equal to Z. Now what is W1? W1 is W plus Z times X. So W plus Z times X divided by X plus Y. So divided by X plus Y plus W plus X times Z. W plus X times Z divided by Y plus Z. Y plus Z. And this is nothing but equal to W. And I think what it has done is it has given me an equation, a relation in between W, X, Y and Z. Now all I have to do is for the second part, take W on one side,
and others on the other side, and again try to write w in terms of xyz, and maybe hope that while solving this I'm able to also prove the first part, right? So let us cross multiply first of all. So cross multiply, so it is going to be it is going to be, you know, wxy plus wxz plus zxy plus z square x plus cross multiply this. So it is going to be wzx or wxz plus wyz plus x square z plus xyz plus xyz. I think we made some mistake here. So wxy, wxz, xyz. Oh yeah, it is correct. Is equal to what is there on the right hand side. So let us write the right hand side. It is going to be wxy plus wxz plus wy square plus wyz. And let us hope some good terms cancel each other. So again, what we are able to cancel, this goes. Wyz goes. Wy square, there is no term, and wyz also goes away. Right? So we are left with two terms of w. One is this, the other is this. So what I'll hope is I'll bring all the terms of w on one side. So take this on the other side. So we have left hand side, we're left with zxy plus z square x plus x square z plus xyz. xyz. So these four terms on one side is equal to w times y square minus xz. And I think we are done with both the parts here. We are done with both the parts here. The first part is proof that y square is greater than xz. So for the first part, I can say the left hand side is positive because left hand side represents some combination of product of areas. Again, if I want, I can simplify this also by taking z common maybe, but I don't need to do that. This is always positive. That would imply right hand side is also positive. Right hand side is a multiplication of w and y square minus xz. So that would mean y square minus xz is positive, giving us y square is greater than xz. And again, I think the second part is also done. Second part was w in terms of x, y, z. So again, w is going to be this whole upon y square minus xz. So w, I think what I can do is I can take xz common just to simplify. Xz common. So if I take xz common, I'll be left with y plus z plus xz common x plus y. So 2y plus x plus z. 2y plus x plus z upon y square minus xz. Right, so this expression is of w in terms of x, y and z, and we are done. Right, so this was very simple problem as far as ISI is concerned, because these are the kind of problems that we discuss at the basic level for IOQM preparation. Right, and I'm very sure जिन बच्चों ने ये ज्योमेट्री अच्छा है जिनका, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन तो अच्छी तरह किया होगा, because it was nothing but calculation of ratios of areas, and that is it. I hope this is clear. All right, so let us do this problem 4 of ISI 2023 UGB. It says let n1, n2, n3 up to n51. So these are 51 be distinct natural numbers, each of which has exactly 23 positive integers, factors. So each of these 51 numbers have 23 integral factors. Okay. For instance, 2 to the power 2022, of course, we know that this number is going to have 23 factors, right? Assume that no prime number larger than 11 divides any of the ni's. So the maximum prime is 11. So what are the available primes? 2, 3, 5, 7, 11. So these are the available primes with us. Show that there must be some perfect cube among the ni's.
those NIs are going to have some perfect cube. This is what we want to prove, right? And I think this is a very amazing question based out of combination of maybe divisors, number of divisors, and also PHP, pigeonhole principle. So again, इनका एक बहुत ही perfect combination है. हालांकि PHP, the pigeonhole principle is not that not well used in this particular question, but again, we can say that it's the basic application of pigeonhole principle, right? It is also given that 2023 is 7 into 17 into 17. So this is not a prime number as it seemed to be. It is 7, 17, 20. Now, one thing which we should know is if a number is of the form 2 to the power A, 3 to the power B, maybe 5 to the power C, number of factors is equal to A plus 1, B plus 1 into C plus 1. Right, so we should be very clear about this. So if a number has 23 factors, what are the possible ways of writing the prime factorization of this? Let's say there are primes P1, P2, P3 and so on, P4. These are the primes representing 2, 3, 5, 7, 11. P1 is less than P2, right? So let's say these are the primes. Okay, or we can just simply, instead of PIs, we can write the primes as ABC. Doesn't really matter. They represent the primes. So first of all, if a number has 23 factors, what can be the prime factorization of this number? So one is A to the power 2022. Just this, where A can be any of these primes. A is any of these primes. A to the power 2022 is going to have 2023 factors. That is number one. The other way is going to be what? A to the power 2023 is, by the way, this. So A to the power, I'll write 288, B to the power 6. B to the power 6. In this case, of course, the number of factors are going to be 289 into 7. 289 into 7. So this is one of the ways of putting the number as A to the power 288, B to the power 6 is one way. The other way can be A to the power 16 and B to the power, what is 7 into 17? 49, 118. 118. So A to the power 16, B to the power 118 is another way of putting this prime number, wherein the number of factors of this form, where A and B are primes, is 17 into 119. So 17 into 119 is another way. The other way would be A to the power 6, B to the power 16, C to the power 16. So that way 7 into 17 into 17 would make it 2023. So this is another way of writing it. And these are the only possible ways. Because 2023 is this, and there can be limited number of ways of splitting this as factors. And these are the ways, right? Of course, if I say A to the power 288, B to the power 6, of course, if I put A as 2, maybe B as 3, they can be reversed. 3 to the power 288, 2 to the power 6, or 2 to the power 288, 3 to the power 6 are two different combinations, right? So these are the total number of ways. And one good thing, as per the question is concerned, is in this particular case, any number is always going to be a perfect cube. Any number is always going to be a perfect cube because this is also a multiple of 3, this is also a multiple of 3. So any number of this form is a multiple, is going to be a perfect cube, while all others, इनमें से कोई और perfect cube नहीं होगा. This number is what we are interested in. मैं चाह रहा हूं और देखना चाह रहा हूं कि क्या कोई नंबर इस फॉर्म का होगा. Now let us count कि इस फॉर्म के कितने numbers possible हैं. So now I can say A can be any of these numbers. So again, there are 5 possible. There are 5 possible ways in which A to the power 2 can be written, where A is 2, 3, 5, 7 or 11. What about this? A to the power 288, B to the power 6. So can I say A and B are two distinct primes out of 2, 3, 5, 7, 11, which can be chosen in 5C2 ways. 5C2 ways. So 5C2 is 10. 5C2 is 10, but the problem is this is to be multiplied by 2.
This is to be multiplied by 2. So this is going to be 20. I hope this is clear. I hope this is clear. Yes? Now, why would this be multiplied by 20? See, see, why would this be multiplied by 2 to give it 20? See, if I choose A as 2, so 2 to the power 288, and maybe B as 3, 3 to the power 6. So this number is going to give me, this number is going to have 20, 23 factors. Likewise, if I exchange 3 and 2 only, so 3 to the power 288 and 2 to the power 6 is also going to give me the same number of factors, that is 20, 23. So if I choose any two of these, can they say they can be rearranged in these two in 2 factorial ways? So 20 is going to be the total number of ways of this number. Let us look at this. Can I say this is going to be same? 20, 5C2 into 2. 5C2 into 2. I hope this is clear. What about this? What about this? Now see, this. First of all, I need to choose A, because A power is different from B and C. So out of 5, pick any one. Out of 5, pick any one, 5C1 ways. 5C1, any one of the numbers for A can be chosen. Out of the remaining 4, can I say I can choose any 2 for B and C? Choose any 2 for B and C. So this gives me 5 into 6, that is 30. Now the question becomes very simple now. See, so how many total cases are there? It is 30. So it is going to be 30 plus 20 plus 20 plus 5. That is 30, 40, 50, 75. So total number of cases are going to be 75. So there can be total of 75 numbers which can get formed, which has 23 factors. Okay. Now what are our favorable cases? Now favorable cases, one is this. This number is going to be a perfect cube, and also this number is going to be a perfect cube because 2 plus 2 plus 2 is 6. So this is also power of 3. So basically these are our favorable cases. These are the favorable cases. So basically these 75 can be divided into 3 boxes. So box A, box B, box C. Let's say box A contains 25, these 2 numbers. Box B contains 20 numbers, that is this number, and box C contains 30 numbers. Or in other words, there are, let's say, 25 pigeons in box A, 20 pigeons in box B, and 30 pigeons in box C. And if I want to select 51 pigeons out of these, can I say 1 pigeon has to come from box A? So if 1 pigeon comes from box A, 51st pigeon, right? So I take the worst case scenario, 30 are from here, 20 are from here. So 50 numbers, if I have to choose, there can be 50 numbers which are not perfect cubes. But 51st number has to come from this box. So at least one of the numbers has to come from box A, and this is the most simple application of pigeonhole principle. Right, so there are 25 boxes, pigeons in box A, 20 in box B, and 30 in box C. If I am to select 51 pigeons, at least one pigeon has to come from box A. And if any one of the pigeons come from box A, that pigeon is going to be a perfect cube. So as to say, that number is going to be a perfect cube, and we are done. Right, so it involved a bit of, we can say, factors, a bit of number theory, and a basic application of pigeonhole principles. Again, this would be categorized as an easy question, and you should have done this question if halka fulka bhi, thoda bahut bhi combinatorics की knowledge है. I hope this is clear. देखो थोड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट यस क्वेश्चन वाज इजी. क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ साइज 1 by n. तो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है 1 by n साइज का, है ना. दिस हैज टू बी कवर्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ टाइल्स, रेड, ब्लू एंड ब्लैक. 3 टाइप की टाइल अवेलेबल है. रेड टाइल की डायमेंशन है 1 by 1, तो स्क्वायर टाइल है. ब्लू टाइल की डायमेंशन भी 1 by 1 है, तो मतलब दो अलग अलग कलर्स के 1 by 1 टाइल्स अवेलेबल है, रेड एंड ब्लू.
एंड देन कह रहे हैं द ब्लैक टाइल्स आर ऑफ द साइज 1/2, तो ब्लैक एक रेक्टेंगुलर टाइल है, डोमिनो टाइप का 1/2 टाइप का, राइट. Let Tn denote the number of ways that in which this can be done. For example, T1 is equal to 2. T1 2 इसलिए because 1/1 को हम या तो रेड कलर से कर सकते हैं या फिर ब्लू से, राइट. एंड T2 equals to 5. T2 के लिए देखो चार ऑप्शंस बनते हैं, या तो हम दोनों 1/1 से करें रेड रेड, या दोनों ब्लू ब्लू, या हम रेड ब्लू कर सकते हैं, राइट. और वी कैन से ब्लू रेड, या फिर हम दोनों को एक 2/1 जो कौन सा कलर का है, जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, ब्लैक कलर से हम इसको टाइल कर सकते हैं, राइट. तो इन टोटल T2 इज 5. तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली पूछा गया, ठीक है. तो अब फर्दर कह रहा था कि वी नीड टू प्रूव टू थिंग्स. फर्स्ट पार्ट कह रहा है T of 2n T to 2n plus 1 that is equal to Tn into Tn minus 1 plus Tn into Tn plus 1. Alright. तो मतलब बेसिकली एक रिकरेंस रिलेशन बनाना है T2n plus 1 के लिए, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 into odd number of grid के लिए, for all n greater than 1 के लिए, all right. Secondly, we need to prove Tn is this. Okay, तो हमें बेसिकली एग्जॉस्टिव सेट ऑफ Tn बताने की एग्जैक्टली Tn की वैल्यू क्या होगी. बेसिकली ए पार्ट में Tn हमें काइंड ऑफ रिकरेंस रिलेशन में बताना है, बी पार्ट में उसी की वैल्यू बताने की क्या होगी, और ये हमें प्रूव करने को बोला हुआ समेशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 n minus d से d 2 raised to power n minus 2d, और this is basically MCR, and obviously अगर r greater than m होगा तो this will be 0, है ना. MCR will be obviously 0 अगर r m से बड़ा होता है, and बाकी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है MCR की, राइट. ऑलराइट, तो लेट्स प्रोसीड विद पार्ट ए. आई होप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो सबको क्लियर होगा, है ना. तो हम अभी ए पार्ट देखते हैं. तो बेसिकली वी हैव अ ग्रिड ऑफ दिस थिंग 1 into 2n plus 1 का ग्रिड है, बिकॉज हमें T2n plus 1 निकालना है, वो हमें एक रिकरेंस रिलेशन के थ्रू प्रूव करना है, ठीक है. अब देखो इसको ना बड़े आसानी से क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ पे Tn minus 1 और Tn plus 1, ठीक है. तो Tn nth टाइल के अराउंड कुछ बोला गया. लेट्स अज्यूम ये हमारा Tn था. Tn पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है. Tn पर मैंने बेसिकली इस ग्रिड को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से कट किया जो मेरे nth स्क्वायर के बाद आ रहा है, ठीक है. So this is let's say first, second and so on. This is nth square, and यहाँ पर फिर कितने बन रहे हैं n plus 1 square. ये मैंने ऐसे ही assume किया, ठीक है. अब यहाँ पर अगर लेट्स से हमने टाइलिंग कर दी है, तो इस ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन जो रेड कलर से ड्रॉन है ना, वो हो सकता है इस ग्रिड को कट करे, मतलब किसी टाइल को कट करे, ठीक है. ये हो सकता है किसी टाइल को ना कट करे. किसी टाइल को कब कट करेगी, सोच के देखो, जब यहाँ पर एक 2/1 का टाइल होगा, 1/2 का यहाँ पर जब भी एक टाइल होगा 1/2 का, तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है वो उस टाइल को कट करेगी. या फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर ये 1/2 का नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पर एक इंडिविजुअल टाइल होगा 1/1 का, एंड यहाँ पर भी 1/1 का या 1/2 का टाइल होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे बेसिकली 1/2 का भी हो सकता है, 1/1 का भी हो सकता है. मतलब पॉइंट इज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि या तो जो हमारी ये वाली लाइन है वो टाइल को कट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है. तो दो केसेस लेते हैं. केस 1, ये जो हमारी लाइन है, दिस लाइन डू नॉट कट एनी टाइल. केस 2 में इट कट्स. अब कट कर रही है तो ऑब्वियसली इट विल कट अ 1/2 टाइल, ठीक है. क्लियर. तो अगर लेट्स से केस 1 की बात कर रहा हूं, मैं कट नहीं कर रहा, तो ये वाले नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, nth स्क्वायर था मेरा, है ना. दिस इज Tn, टोटल 2n plus 1 स्क्वायर थे, यहाँ पर अब n स्क्वायर है, तो Tn वेज से मैं इसको टाइल कर पाऊंगा यूजिंग ऑब्वियसली 1/1 के दो कलर से और 1/2 का एक सिंगल कलर, ठीक है. बाकी जो रिमेनिंग टाइल बच जाते हैं वो n plus 1 है, उसको मैं कितने तरीके से टाइल कर पाऊंगा, Tn plus 1 से, ठीक है. तो होपफुली ये चीज समझ में आनी चाहिए. ये हमारा केस 1 में नंबर ऑफ वेज हो गए जब ये डॉटेड लाइन किसी भी टाइल को, किसी भी डोमिनो को कट नहीं कर रही, किसी भी टाइल को कट नहीं कर रही. अब अगर केस 2 लेते हैं हम, अगर ये एक 1/2 टाइल को कट कर रही है, ठीक है, तो मतलब हमारी एक ये एक ही सिनेरियो में होगा जब हमारे पास ये एक 1/2 का टाइल यहाँ पर पड़े, क्योंकि 1/2 का टाइल एक ही है, तो इसको रखने का एक ही तरीका है, इस सेंटर वाली लाइन को रख दिया. अब
ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर्स बचते हैं, n-1 स्क्वायर्स बचेंगे, उनको अरेंज करने के Tn-1 वेज, ठीक है। यहाँ पर कितने स्क्वायर्स बचेंगे टोटल? देखो n स्क्वायर्स पहले थे, है ना, n-1 यहाँ पर थे, ये 2 स्क्वायर्स हमने यहाँ कंज्यूम कर लिए, तो दीज आर n स्क्वायर्स, है ना। n स्क्वायर्स को टाइल करने के हाउ मेनी वेज विल बी देयर? t. So this will be number of ways in which we can tile the entire grid in when a dotted line, or you can say this line is cutting a 1 by 2 tile. So total number of ways which is t in 2n plus 1, है ना। जो 2n plus 1 ग्रिड को टाइल करने के होंगे वो केस 1 या फिर केस 2, दैट मींस tn मल्टीप्लाइड बाय tn plus 1 या फिर tn minus 1 multiplied by tn, or you can say let's take tn common, this will become tn minus 1 plus tn plus 1, ठीक है। this is what we need to prove in first part, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें यही काइंड ऑफ प्रूव करना था, राइट। दिस इज this recurrence relation t2n plus 1 that is equal to tn into tn minus 1 plus tn, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमें एग्जॉस्टिव सेट बताना था, मतलब बेसिकली tn एग्जैक्टली क्या होगा ये चीज हमें बतानी थी, ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, लेट्स से इस हमारी जो 2n plus 1 वाली ग्रिड है, ठीक है, सॉरी n की ग्रिड है, लेट्स से इसमें मैं मान लेता हूँ जो 1 by 2 वाली टाइल्स हैं, दे आर, यहाँ पे d की बात कर रहे तो दे आर d इन नंबर्स, ठीक है। कहीं पर भी पढ़िए, लेट्स से दीज आर 1 by 2 टाइल्स, ये कुछ d इन नंबर्स हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग इसमें ना थोड़ा सा बैगर्स मेथड से हम करना चाहेंगे, जो कॉम्बिनेटोरिक्स का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा अप्रोच रहता है, ठीक है। हमने d टाइल्स के रख दी, तो टोटल इट विल कंज्यूम 2d स्क्वायर्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर लेफ्ट? n minus 2d, these are the squares that are left, है ना। अब d टाइल्स हमने रख दिए, स्टार्टिंग और एंड वाली पोजीशंस मिलाकर हाउ मेनी नंबर इज देयर? स्टार्टिंग और एंड वाली पोजीशन मिलाकर, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ कि यहाँ पर लेट्स से a1 टाइल है, यहाँ पर a2 नंबर ऑफ टाइल्स है, यहाँ पर a3 नंबर ऑफ टाइल्स हैं, एंड सो, ठीक है। तो दिस a1 plus a2 plus a3 plus and so on. पहली बात तो this should be how much? Remaining number of squares, that should be n minus 2d. And can you tell me how many variables are these? These are d plus 1 variables. Obviously है ना, स्टार्टिंग और एंड वाला मिलाओगे आप, तो बिकॉज हमने d टाइल्स d 1 by 2 की टाइल्स लगाई, राइट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अगर मैं इसके नंबर ऑफ वेज निकालता हूँ, इसके नंबर ऑफ वेज क्या होते थे? n minus 2d plus d plus 1 minus 1, right? c d plus 1 minus 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज होते थे ऑफ और इन हमने ये पढ़ा हुआ ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दैट इज n plus r minus 1 c r minus, दैट्स ये यहाँ पर लगाया, और दिस इज बिहेविंग लाइक n, d plus 1 is our r, ठीक है, and hence this formula, and this comes out to be how much? 1 get cancelled out with 1, so this is n minus d c d, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इतने तरीके से हम 1 by 2 की टाइल्स इसमें बिछा सकते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। तो हमने 1 by 2 की टाइल्स बिछा दी। अब रेस्ट ऑफ द टाइल्स, अब क्योंकि 1 by 2 का कलर एक ही था, तो बस दिस शुड बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन प्लेस दिस थिंग, n minus 2 टाइल्स, है ना। अगर d टाइल्स अवेलेबल है तो, अगर d इन नंबर, है ना, यहाँ तक क्लियर। अब रिमेनिंग जो n minus 2d टाइल्स बची, दीज आर द रिमेनिंग टाइल्स, बिकॉज एक 1 by 2 का टाइल्स दो स्क्वायर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो टोटल n स्क्वायर थे, तो n minus 2d ये हमारे रिमेनिंग स्क्वायर्स हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द रिमेनिंग स्क्वायर्स। अब इन रिमेनिंग स्क्वायर्स के पास, हमारे पास हर स्क्वायर के पास वी हैव टू ऑप्शन, बिकॉज वी हैव टू कलर्स, है ना। 1 by 1 के देयर वर टू टाइल्स, अगर आपको ध्यान हो, there were red tile which is of 1 by 1, and there was blue tile which is also 1 by 1, ठीक है। तो इन n minus 2d स्क्वायर्स के लिए हर स्क्वायर के पास we have two options. In total we can say we can place these red squares by 2 raised to power n minus 2d, ठीक है। क्लियर? तो इस कहानी से हमें क्या मतलब निकला, अगर हमें एक d नंबर ऑफ टाइल्स गिवन जो 1 by 2 की जितनी अवेलेबल,
तो उसको प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज विल बी n minus d c d multiplied by 2 raised to power n minus 2d. ठीक है, अब इसी का हमने सिग्मा चला दिया, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब d 1/2 की कितनी टाइप हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मैक्सिमम जब तक n कवर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसीलिए इसने अपर लिमिट नहीं दी हुई, बिकॉज दैट विल एंटायरली डिपेंड ऑन कि वेदर n इज इवन और ऑड। अगर n इवन है तो d की मैक्सिमम वैल्यू n/2 हो जाएगी, राइट। अगर n ऑड है तो d की मैक्सिमम वैल्यू n-1/2 हो जाएगी। मेक सेंस, ये समझ में आ रहा है। एंड इसीलिए शायद इसने यहाँ पर ये लिखा था कि भैया जब तक चल रहा है ये डेफिनेशन होगी, अदरवाइज इट इज जीरो। ठीक है, एंड दैट वाज ऑब्वियस मीनिंग ऑफ एनसीआर, है ना, राइट। तो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रूव सेकंड पार्ट। So this is the number of ways of covering 1 by n grid if we have d number of 1 by 2 tiles. Now we can vary d from 0 to up to its maximum value, and hence this summation sign, right? So hopefully ये वाला क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, right? हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस गिवन था un, जिसमें u1 1 गिवन था एंड un plus 1 इज इक्वल टू un plus 1 by un, एंड वी हैव टू प्रूव दिस थिंग un इज लेस देन इक्वल टू 3 रूट n by 2। सो सबसे पहले हम कुछ फर्स्ट फ्यू टर्म्स ट्राई करते हैं कि क्या क्या बन रही हैं। लेट्स से अगर मैं u2 ढूंढता हूँ, दैट इज 1 plus 1 by 1, that is 2, and then u3 is 2 plus 1 by 2, that is 2.5, and then u4 is equal to 2.5 plus 1 by 2.5. So clearly we can see कि जो टर्म्स की वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही है, बट जो इंक्रीज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट। लाइक पहले 1 और 2 में गैप 1 का था, देन 2.5 और 2 में गैप 0.5 का रह गया, देन नेक्स्ट में गैप और भी कम हो रहा है। सो डेफिनेटली जो वैल्यू है वो बढ़ तो रही है, बट वो इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। तो ये एक तो ये ऑब्जर्वेशन हमें दिख रही थी। सेकंड थिंग, अगर आप देखो un इज लेस देन इक्वल टू 3 रूट n बाई 2 है, सो यहाँ पे एक रूट का टर्म इन्वॉल्व है, राइट। तो रूट का टर्म हम लेके आ सकते हैं अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं ना। स्क्वायर रूट से रिलेटेड अगर हम पहले ये वाला एक्सप्रेशन देखें जिसमें un प्लस 1 इज गिवन un plus 1 by un, right? So if we do the squaring both side, we will get u square n plus 1 is equal to un square plus 1 by un square plus 2, right? So this is a relation between the squares. Now if we see un plus 1 square minus un square is equal to 2 plus 1 by un square, right? Now if we do the summation, then what we get, as we need a un, so we can add one more step here, that is at the place of un plus 1 we can use un. So we have un square is equal to un minus 1 square plus 1 by u of n minus 1 square plus 2, right? So ultimately we have un square minus un minus 1 square is equal to 1 by un minus 1 square plus 2. So to find un, we can do the summation both side. So if we do this from 1 to n, in the left hand side we get un square minus u1, means we are applying from 2 to n. So in the right hand side what we have, as we are applying n is 2 to n, so that is 1 by u1 square, 1 by u2 square up to 1 by un minus 1 square n plus 2 times n minus 1, right? Because we have n minus 1 terms here. So now what is 1 by u1 square? It is 1, and it is 1 by 2, and in fact u3 square
is greater than 2 square, u4 square is greater than 2 square, right? So we can make an inequality here by considering all of them, u2 square, u3 square as 1 by 4. So we can say this expression is less than or equal to 1. I put a u1 is 1, and this is 1 by 2 square, and next term is also 1 by 2 square up to 1 by 2 square, and last term is 2n minus 2. So how many 2 square we have? These are n minus 2 terms, right? So that is 1 plus n minus 2 by 4 plus 2n minus 2, and here also un square minus 1 is there, u1. So un square is less than equal to 2 get cancelled with minus 2, and we have 8 and 9n minus 2 by 4, so which is further less than 9n by 4. So un is less than 3 by 2 root n, right? So un is less than 3 by 2 root n. So thank you guys. All right, so now let's proceed to question number 7. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि let n greater than or equal to 1 be an integer and we need to prove that x raised to power n plus y raised to power n plus z raised to power n. This can be written as a polynomial with integral coefficients in the variables alpha, beta, gamma. तो अल्फा, बीटा और गामा की टर्म्स में हम x पावर n प्लस y पावर n प्लस z पावर n को एज अ पॉलिनोमियल लिख पाएंगे, ये हमें ए पार्ट में प्रूव करना था। वेयर अल्फा आपका x प्लस वाई प्लस जेड है, बीटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड गामा एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है ए पार्ट में, एंड बी पार्ट भी ए से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो भी हम देखेंगे। बी पार्ट एक्चुअली कह रहा है कि लेट assume gn equal to x power n sin of na plus y power n sin of nb plus z power n sin of nc, where x, y, z, abc they are real numbers and a plus b plus c is an integral multiple of pi। तो इसमें एक एडिशनल कंडीशन दे दी है, a plus b plus c is an integral multiple of pi। कैसे यूज करेंगे, क्या यूज होगा इसका पता नहीं। फर्दर ये कह रहा है कि यूजिंग ए और अदरवाइज वी नीड टू प्रूव दैट इफ g1 और g2 0 है, और तो वहां पर हमें तीन चीजें गिवन थी, अल्फा, बीटा, गामा, यहाँ पर दो ही गिवन है, g1 और g2 0 है, तो वी नीड टू प्रूव दैट gn विल बी 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो देखते हैं इन दोनों पार्ट्स में कैसे क्या क्या प्रोसीड करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना चाहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो pn है, pn इज नथिंग बट जो हमें गिवन था x पावर n प्लस y पावर n प्लस z पावर n, ये हमारा pn है। ठीक है, तो अगर मैं p1 की बात करूं, p1 इज नथिंग बट x प्लस y प्लस z विच इज एक्चुअली इक्वल टू अल्फा। तो p1 तो हमारा एज अ पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है अल्फा, बीटा और गामा की टर्म में विद ऑब्वियसली इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, है ना। अगर मैं p2 की बात करता हूँ, p2 क्या बनेगा, p2 will be x square plus y square plus z square, है ना, and this p2 can be written as summation of x square, that is x plus y plus z whole square minus twice of summation of xy, that is xy plus yz plus zx, है ना। तो ये बन गया अब हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। तो क्लियरली p2 भी एज अ पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है हमारा अल्फा, बीटा और गामा की टर्म। p3 और देख लेते हैं, p3 में क्या आएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। अब जैसे ही x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आता है तो हमें एक आइडेंटिटी ध्यान आ जाती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz, और यू कैन से नेगेटिव ऑफ xy प्लस yz प्लस zx। तो यहाँ से p3 जो कि होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं 3xyz
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फैक्टर एज इट इज। ठीक है, अब देखो P3 को हम क्या लिख पाएंगे, क्या हमें एक्स वाई जेड गिवन है, यस दैट वाज गिवन टू बी गामा, वो गामा के इक्वल था, तो दिस विल बी 3 गामा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, दैट वाज अल्फा, तो प्लस अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि P2 है, जो हमने अभी निकाला वो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा है ना, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विच इज नथिंग बट बीटा, तो माइनस बीटा, तो P3 हमारा आ गया 3 गामा प्लस अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा विच इज क्लियरली अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये देखो अब हम P1 P2 P3 ये सब चीजें तो लिख पा रहे हैं किसके टर्म में, ये हम अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में लिख पा रहे हैं एज अ पॉलिनोमियल है ना, विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, बट हमें ये प्रूव करना था कि दैट शुड बी वैलिड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n। तो ऑब्वियसली हम ऐसे तो प्रोसीड नहीं कर सकते P4 P5 P6 करें है ना, तो हम इसको यूज करते हैं, हम कुछ या तो अब है ना लेट्स से एक सेकंड रुको, अभी है ना इसमें हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम Pn को निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ P1 P2 P3 या इन टर्म्स ऑफ Pn-1 Pn-2 Pn-3, तो यूजिंग PMI वो हम प्रूफ फिर फर्दर कर पाएंगे, कैसे वो मैं बताता हूँ अभी, बट लेट्स कंसीडर एन एक्सप्रेशन x पावर n-1 प्लस y रेज टू पावर n-1 प्लस z रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y प्लस z। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा क्या है, दिस इज Pn-1, ये हमारा अल्फा था है ना। जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या आपको ये नजर आ रहा है, जब x रेज टू पावर n-1 से होगा तो x रेज टू पावर n, y रेज टू पावर n-1 से y पावर n, तो एक तो हमें Pn मिलेगा यहाँ से है ना, प्लस और क्या क्या मिलेगा टोटल 9 टर्म्स होगी तो 3 टर्म्स तो Pn में आ गई है ना, x इंटू वाई रेज टू पावर n-1 प्लस फिर जब इसका x रेज टू पावर n-1 यहाँ के y से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x पावर n-1 टाइम्स y, सिमिलरली y z रेज टू पावर n-1 प्लस z y रेज टू पावर n-1, सिमिलरली एक टर्म और आएगी x z रेज टू पावर n-1 प्लस z x रेज टू पावर n-1। ठीक है, तो इन टोटल देयर आर 9 टर्म्स। अब देखो अब इस पूरी कहानी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज माय Pn-1 इनटू दिस वाज अल्फा, राइट, दैट इज इक्वल टू Pn प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ से xy कॉमन, यहाँ से yz कॉमन, यहाँ से zx कॉमन, तो xy कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा क्या, अगर मैं इस फैक्टर को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ एक्स वाई रेज टू पावर n-1, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए y x रेज टू पावर n-1, यहाँ से जब हम एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो क्या आपको y रेज टू पावर n-2 प्लस x रेज टू पावर n-2 लग रहा है, ये आता है ना। इसमें अगर हमने z रेज टू पावर n-2 ऐड किया और z रेज टू पावर n-2 सब्ट्रैक्ट किया, तो व्हाट वी विल गेट xy इनटू दिस विल बिकम Pn-2 राइट माइनस z पावर n-2। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ, दिस विल बिकम xy इनटू Pn-2 माइनस z पावर n-2। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा, yz इंटू Pn-2 माइनस, अब यहाँ पर x पावर n-2 आ जाएगा, सेम लॉजिक से। सिमिलरली लास्ट टर्म विल बी xz कॉमन लोगे आप है ना, तो दैट विल बी Pn-2 माइनस माइनस क्या y रेज टू पावर n-2। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन ये बच जाएगा। अब इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो Pn-1 इंटू अल्फा दैट वाज इक्वल टू Pn प्लस, अब यहाँ से देखो क्लियरली Pn-2 बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा क्या xy प्लस yz प्लस zx, वो कितना था बीटा, तो Pn-2 टाइम्स बीटा और माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस है ना। तो इन तीनों में से अगर आप x y z कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या बचेगा z पावर n-3, सिमिलरली यहाँ से क्या बचेगा सेकंड वाले से प्लस x पावर n-3 प्लस सिमिलरली थर्ड वाले से क्या बचेगा y पावर n-3। तो आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, ये बनती है Pn-1 अल्फा इक्वल्स टू Pn प्लस Pn-2 बीटा माइनस दिस वाज गामा
and this is Pn minus 3, ठीक है. और we can say अब यहाँ से हमने Pn निकाल लिया है ना, we have solved Pn and Pn is equals to Pn minus 2 beta, sorry, Pn will be equal to, यहाँ से बन जाएगा Pn minus 1 alpha minus Pn minus 2 beta plus Pn minus 3 गामा. तो Pn को हमने पिछले 3 टर्म्स Pn minus 1, Pn minus 2 और Pn minus 3 की टर्म्स में लिख लिया. शायद काफी बच्चों को यहाँ से कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की भी फील आए, बट एनीवेज अब क्या हम बोल सकते हैं, इफ P1 इज ट्रू, जो हमने लास्ट स्लाइड में प्रूव किया था, P1 was true. ट्रू होने का मतलब क्या है कि P1 को हम पॉलिनोमियल्स में लिख पा रहे थे अल्फा बीटा गामा की टर्म में. P1 was alpha, P2 was also polynomial in terms of alpha beta gamma with integral coefficients, है ना. And P3 is also true, that is P3 is also integral coefficients की टर्म में और वेरिएबल्स के तुम्हारे अल्फा बीटा गामा ही है, ठीक है. तो P4 जो है, अब मैं यहाँ से P4 निकाल सकता हूँ. P4 will be obviously क्या बनेगा, अल्फा टाइम्स P3 माइनस बीटा टाइम्स P2 प्लस गामा टाइम्स P1, ठीक है. तो यहाँ पर P4 भी ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में ही आएगा, बिकॉज P3 P2 P1 भी है. अब P4 आ गया, तो सेम लॉजिक से अब हम रिकर्सिवली वी कैन कंक्लूड दैट P5 will also be true, P6 will also be true. That is क्योंकि Pn अपने पिछले तीन एक्सप्रेशंस पे डिपेंडेंट है, Pn minus 1, Pn minus 2, Pn minus 3 पर. तो अगर Pn minus 1, Pn minus 2, Pn minus 3 और अगर हम स्टार्टिंग से बात करें P1, P2, P3 अगर हम पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में लिख पा रहे हैं, then we will be able to write P4, P5, P6 using mathematical induction, right? तो A पार्ट तो यहाँ से प्रूव होता है, ठीक है. होपफुली अब A पार्ट ऑलराइट. अभी इसका देखो बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट काफी आसान था. बी पार्ट में काइंड ऑफ ए पार्ट ही यूज करना है. देखो क्वेश्चन कह रहा था बी पार्ट में gn हमें दिया है x पर n sin n a, y पर n sin n b, z पर n sin n c, ठीक है. वेयर x y z ये आपके x y z a b c ये रियल नंबर्स हैं, such that a plus b plus c is an integral multiple of pi. अब यूजिंग a और अदरवाइज वी नीड टू प्रूव दैट g1 g2 ये अगर g1 g2 0 है तो gn 0 होगा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n, ठीक है. देखो ये इजी है. क्यों इजी है, ध्यान से देखना. जहां पर भी इस टाइप की चीज आती है तो वी कैन से कि ये भैया देखो साइन ऑफ एन ए, साइन ऑफ एन बी, साइन ऑफ एन सी, ये एन ए एन बी एन सी कहाँ आता था पावर एन करने के बाद, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता था, है ना. अगर मैं एक्स ई पावर आइटा ए की पावर एन करता हूँ तो इसको मैं लिख पाऊंगा एक्स पावर एन कॉस ऑफ एन ए प्लस आइटा एक्स पावर एन साइन ऑफ एन ए. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक्स पावर एन साइन ऑफ एन ए, अगर लेट्स से इसको मैं कैपिटल एक्स को ये मानता हूं तो कैपिटल एक्स पावर एन का इमेजिनरी पार्ट है ना, साइन एन में. ये समझ में आना चाहिए. तो अगर मैंने ए पार्ट में लेट्स रिप्लेस कैपिटल एक्स बाय इक्वल्स टू स्मॉल एक्स ई पावर आइटा ए, कैपिटल वाई एज स्मॉल वाई ई पावर आइटा वाई इनटू ई पावर आइटा बी, इन सिमिलरली कैपिटल जेड एज small z into e power iota c, ठीक है. तो can I say imaginary part of this thing x power n plus y power n plus z power n, that is nothing but gn, ठीक है. ये समझ में आ रहा है. अब क्वेश्चन में हमें g1 गिवन था, that means imaginary part of x plus y plus z which is actually imaginary part of alpha, that is given to be 0. सिमिलरली G2 क्या था, देखो आपको ध्यान होगा, हम G2 तो बेसिकली क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है. दैट इज गिवन टू बी G2, ठीक है. और यू कैन से आपको ध्यान होगा हमने ये जो P2 था, P2 हमने एक्सप्रेस किया था अल्फा और बीटा की टर्म में, where beta was this thing xy plus yz plus zx, ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में G2 भी गिवन है 0, ठीक है. तो P2 मतलब बेसिकली यहाँ से वी कैन कंक्लूड कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, अल्फा भी 0, तो बीटा हैज टू बी 0, ठीक है. अब G2 was given to be 0, तो दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ
this thing x square plus y square plus z square, that is given to be 0, है ना. That means beta will be 0. Beta 0 समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? Imaginary part of beta will be 0, क्योंकि imaginary part of alpha 0 है. अब इस पूरे का एंटायर का इमेजिनरी पार्ट 0, तो बीटा का भी, दैट मींस xy plus yz plus zx का भी इमेजिनरी पार्ट 0 होना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट्स कंसीडर गामा. गामा क्या बन रहा है हमारा? गामा इज x इंटू वाई इंटू जेड. एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, वाई की गिवन है, जेड की गिवन है. तो गामा बन जाएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड का प्रोडक्ट इंटू ई पावर आइटा a प्लस बी प्लस सी. होपफुली ये समझ में आना चाहिए. अब क्वेश्चन में गिवन था a प्लस बी प्लस सी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. तो इसका जो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अब n पाई है, तो वी कैन से दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू ई पावर आइटा n पाई. तो दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा विल ऑल्सो बी 0. ठीक है. इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा भी 0 होगा. ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. होपफुली यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. ठीक है. अब एक चीज और देखो, अगर मैं प्रोसीड करता हूँ, अब लेट्स से अब हमें प्रूव क्या करना था कि हमें g1 g2 अगर 0 गिवन है. ठीक है. अगर हमें g1 g2 0 गिवन है, तो gn शुड बी 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो सबसे पहले हम g3 देखते हैं. ठीक है. g3 इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और यू कैन से इमेजिनरी पार्ट ऑफ p3. ठीक है. थोड़ी देर पहले हमने p3 निकाला था. p3 याद है आपको? p3 हमारा ये आया था. अब इसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अल्फा का इमेजिनरी पार्ट, बीटा का इमेजिनरी पार्ट और गामा का इमेजिनरी पार्ट 0 है. तो ऑब्वियसली फिर p3 का इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा. ठीक है. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ p3 दैट इज g3 भी 0. ठीक है. और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था? pn को वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ pn-1 का कुछ कोएफिशिएंट, एंड इनफैक्ट वो रिलेशन भी हमारे पास था. ये रहा वो रिलेशन. ठीक है. pn को हम अल्फा टाइम्स pn-1, बीटा टाइम्स pn-2, गामा टाइम्स pn-3 की टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है. तो दैट मींस क्या, अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ pn की बात करें, ठीक है, तो दैट मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ pn, ठीक है, दैट विल बी व्हाट? इमेजिनरी पार्ट दैट इज नथिंग बट gn, एंड सिंस gn इज a polynomial in terms of alpha, beta, gamma, right? Gn is a polynomial in terms of alpha, beta, gamma, and alpha, imaginary part of alpha is also 0, imaginary part of beta is also 0, imaginary part of gamma was also 0 because a plus b plus c was a multiple of pi. So यहाँ से we can conclude कि भैया Gn जो है वो 0 होगा for each and every positive integral value of n. ठीक है. एंड इनफैक्ट यही हमें प्रूव करना था कि यूजिंग a part और अदरवाइज, है ना, प्रूव दैट gn विल बी 0 फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n अगर n आपका 3 या 3 से बड़ा होता है. ठीक है. तो g1 g2 0 था, g3 अपन ने जस्टिफाई कर दिया, और gn को जस्टिफाई करने के लिए हमने a पार्ट का यूज किया, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ pn को हमने pn-1, pn-2, pn-3 की टर्म्स में लिखा हुआ था. दैट इज अल्फा बीटा गामा के पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में वो लिखा जा रहा था. राइट. तो इस तरीके से हम इसका b पार्ट प्रूव कर सकते थे. होपफुली ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ गया होगा. dt and mod outside. Here on the left hand side, this is throughout positive, but f dash t could be sometimes positive or negative also. In that case, left hand side integral will be lesser, right side will be bigger. Okay, f is differentiable function, so f dash t integral will be ft, and you can write this right hand side as mod of f1 minus f0. And here remember, this equality will hold only if f dash t has same sign, because if it is having same sign, then both sides it is same thing. Even if f dash is throughout negative, this integral will be a negative thing, but outside mod will make it positive, so that both sides will become same. Now
we have to prove that either fx is a linear or this inequation. So I'll assume otherwise. Let mod of f1 minus f0 is greater than or equal to mod of f dash t for all t belongs to 0 comma 1, because we are given this thing for that we are given that for some t, or there exists some t such that this mod is less than mod f dash t. So I am assuming that for all t this thing is greater than or equal to f dash t. Now there can be two scenarios. Number one, that either f1 minus f0 is equal to mod of f dash t for all t. In that case, if I do the integration from 0 to 1 of this f1 minus f0 dt will be equal to 0 to 1 f dash t dt. Mod f1 minus f0 is a constant thing, so we can keep it outside, and then integration 0 to 1 dt will be just 1. So this will be equal to 0 to 1 mod of f dash t dt, and this is my equation number 2. Now equation 1 and 2, they can both be true together. As I told you, 1 and 2 can be true only if this f dash t is of same sign, and also this f1 minus f0 has to be some constant, and this is equal to mod of f dash t. So here f dash t will be equal to plus k or minus k, and also it is not possible that sometimes it is plus k, sometimes minus k. As I told you, from 1 and 2, for 1 and 2 to be true together, this f dash t should be of same sign, either positive only or negative only. So here this ft will be either k into t plus b or minus k into t plus b. So if I write in terms of x, we can write this fx as ax plus b, where a is either k or minus k, plus minus k you can say. Now coming to the other scenario, number 2. What could be the other scenario? I assume that f1 minus f0 mod is greater than or equal to f dash t. So let us assume that it is equal to f dash t for some t, and f1 minus f0 is greater than f dash t, and in fact with mod sign greater than this for other t. Okay, I think this is what I assumed here. So what I am saying now, it is equal to f dash t sometimes, and it is greater than f dash t for other times. Now in this case, please try to understand. If I draw two graphs, one f1 minus f0 mod, this will be a constant function, okay, and f dash t can be, depending upon t, can be some variable thing. But as per what we have assumed here, suppose this f1 minus f0 is like this, and this is t. This graph of f dash t, mod f dash t, will be that it will be sometimes, let me use some different color. Yeah. So what could be possibility that we can take this f dash t like this also, because it has to be lesser than f dash t, mod f dash t has to be lesser than this mod f1 minus f0, or equal at some values. So I think from this graph it is very much clear that integral 0 to 1 f1 minus f0 dt will be strictly greater than 0 to 1 mod f dash t dt. Okay, that is my 3. Now if you compare it with 1, okay, where this thing was greater than or equal to, whereas we have found this to be strictly lesser than. So 1 and 3
are not possible together. Okay, but as you know, one has to be true, one has to be true. So that means 3 is not. Okay, and why 3 is not? It is because of our assumption. So this assumption number, this 2 is wrong. Let me say this as assumption 2. This was my assumption 1. Okay, so this assumption 2 is wrong. And why it is wrong? That if it is equal to f dash t, then it is not possible that it becomes greater than f dash t, mod f dash t for all other t. It has to be otherwise. So for f1 minus f0 equal to mod f dash t for some t, this so for this is equal for some t, f1 minus f0 mod will have to be less than f dash t mod. For this to be always equal to f dash t, we have already done in our assumption 1. Here this will be less than mod of f dash t. So I think this is how it is done. What they are saying, either f is linear, that means if f dash t is throughout constant, then it will be like this. But if it is not, as we took here, if it is f dash t, this thing is equal to f dash t for some t only, then for some t it has to be like this also, for at least you can say some t, and hence proved. Okay, thank you so much. All the best, bachcho.